नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ठीक ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और बताइए क्या कर रहे हो अभी? लाइक डन कर दीजिएगा। अभी तो खाना बनाएंगे। इस टाइम सब्जी रोटी बनेगा। आप क्या कर रहे हैं अभी? फ्री बैठे हो? कुछ काम धाम नहीं है? चाय वाय हो गया? काम नहीं करते हो? क्या करते हो वैसे आप? बैठे रहते हैं सारा दिन? झूठ मत बोलिए, बैठे रहने से काम थोड़ी चलेगा। गुजारा थोड़ी होगा बैठे रहने से। कुछ तो जरूर करते होंगे। राधे श्याम। नहीं, कुछ भी नहीं करते। अच्छा।
कौन सी गाड़ी लिया? बहुत बहुत बधाई हो। कौन सी गाड़ी लिए? अरे वाह, स्कॉर्पियो ले लिए बिना कुछ किए। करते भी नहीं, बैठे बैठे ले लिए। बोलते कुछ काम काज भी नहीं करते। कौन खरीदा? आपके पापा ने? पापा के पैसों से खरीदे? अरे मैं तो सोची पापा हैं, आपके पापा ही खरीद के दिए आपको। ये तो बड़ा दुख का बात है। और कौन कौन है घर में आपके? अच्छा, 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 अच्छा। थैंक यू लाइक करने के लिए सिस्टर। माता जी और दो बहनें हैं बस। अच्छा, आप बड़े हो, बहनें छोटी हैं? बहनों का शादी वादी हो गया? आपसे छोटी हैं, बड़ी हैं बहनें? अच्छा अच्छा, आप बड़े हो, एक की शादी हो गई, एक है शादी करने। चलो हो जाएगा। आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है घर की।
अच्छा, इटली में रहते हो आप, रहने वाले कहाँ से हो, मतलब मूल निवासी कहाँ के हैं आप? बताए थे, बताए थे पंजाब के रहने वाले, भूल गई थी मैं। पंजाब के रहने वाले हैं और इटली में रहते हैं। अच्छा, तो कितने कितने दिन पे घर पे जाते हैं पंजाब, मतलब कब कब जाते हैं? 2 साल बाद जाते हैं, बड़ा लंबा टाइम। मतलब जैसे सब सऊदी दुबई जाते हैं, वैसे आप मतलब दो दो तीन तीन साल पे लौटते हैं? 2 साल का दिन बहुत होता है। आपकी बेटी को क्या हो गया था, कितने बच्चे हैं आपको, कितने बच्चे थे? क्या हुआ था बेटी को? बड़ी थी या छोटी थी? एक ही बेटी थी? कितनी बड़ी थी, कितने साल की थी, क्या हो गया था उसको? अच्छा, 2 साल की थी। अच्छा, बीमार उमार थी क्या? तो आपकी वाइफ तो पंजाब में ही रहती हैं आपकी माँ के साथ? अच्छा, तबीयत खराब थी। बहुत दुख की बात है। एक ही बेटी थी और बच्चे नहीं हैं? और जो होना था हो गया, भगवान की बात, बच्चे बेटी बेटा कुछ हो जाए तो अच्छा है। कुछ बीमारी मतलब रही होगी ऐसे, इलाज तो कराए ही होंगे। कोई पैसे से पीछे नहीं हटता, लेकिन जो भगवान को मंजूर रहता है वही होता है, उनके आगे किसी का नहीं चलता। चलो, बधाई हो।
बधाई हो अच्छे अच्छे से। बेटी बेटा जो दे भगवान हो जाए। अच्छे से ख्याल रखिएगा। आपको कैसे पता है कि बेटी ही है? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। जो भगवान देंगे वही मिलेगा। आजकल बेटी बेटा सब एक समान है। अरे ये सब कराने की क्या जरूरत? चलो ठीक है। जो भी हो जाए अच्छा से ख्याल रखिएगा।
हर हर महादेव। हम अच्छे हैं। और अपना सुनाइए।
बहुत ज्यादा भाव खाते हैं ना। आवाज चालू है। बड़े लोग तो आप हो, हम तो छोटे लोग हैं। हम बड़े लोग नहीं हैं, बड़े लोग आप हो। ठीक है। अरे नहीं। हाँ, मैं छोटे लोग, आप बड़े लोग। बड़े लोग छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। भगवान को तो पता है ही कौन छोटा है कौन बड़ा। भगवान को तो सब कुछ पता है। लड़ने आए हो कि सपोर्ट करने हमारी लाइफ पे, बताओ पहले। लड़ाई करने आए हो या सपोर्ट करने? बड़े लोग होते तो हम ऐसे थोड़ी ना रहते। भगवान करे आपका बात लग जाए, हम बड़े आदमी हो जाएं जल्दी। ऐसे कहते रहो बड़े आदमी, क्या पता कहते कहते हम बड़े आदमी हो जाए, बोलते बोलते। किसी का बात लग भी जाता है ना। बड़े लोग के लाइफ पर जाओगे तो सबके कमेंट्स सुनने पड़ेंगे। 100 कमेंट्स में ना एक आध कमेंट्स पढ़ेंगे बस। वो कमेंट्स कोई मतलब ही नहीं रहता। करते रहो कमेंट्स, पूछते रहो कि हमारा चैनल चेक कर दो, सब करते रहते हैं। हमारे चैनल चेक करती हैं, भैया हम हमारा भी सपोर्ट करिए, दीदी हमको भी बताइए कैसे होता है। वो लोग ध्यान ही नहीं देते, सुनते ही नहीं है। 100 कमेंट जा रहे थे, एक आठ भी पढ़ दिए तो हो गया।
धन्यवाद धन्यवाद। और सुनाइए क्या कर रहे हैं? भिखारी को कोई भीख भी नहीं दे, भीख भी नहीं लेता, जिससे हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट करके तो देखो, एक दिन सपोर्ट करोगे, दूसरे दिन थोड़ा सब्र रखो। आप सपोर्ट करोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। एक दिन करोगे, दूसरे दिन एकदम से वो हो जाते हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, गिन के रखना कितने दिन सपोर्ट किए, उतना उससे ज़्यादा मैं सपोर्ट करूँगी। ठीक है, याद रखना कितने दिन सपोर्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा डबल कर दूँगी। ठीक है, 3 दिन किया, हम 6 दिन कर देंगे। 8 लाइक किया है, ओके। 3 दिन सपोर्ट, 8 लाइक। ठीक है, आज तीसरा दिन है मतलब। और कितने कितने समय तक, कितने कितने देर तक, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितने देर तक उसको लिख के रखना है, बताना है हमें कितना। उतना ही टाइम हम भी सपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा 1 सेकंड इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी हिसाब बराबर। कमेंट हमारा करने का आदत नहीं है, मैं वीडियो देखी थी आपका। मैं किसी के चैनल पे जाती हूँ तो कमेंट नहीं करती हूँ, देख के आ जाती हूँ। लेकिन कमेंट करना चाहिए, तभी पता चलता है कि किसी ने हमारा वीडियो देखा है। शॉर्ट ही वीडियो है टोटल आपके चैनल पर, शॉर्ट वीडियो है। और लाइव सिर्फ एक दिन की एक लाइव है, लॉन्ग वीडियो नहीं है। पूरा चैनल में देखिए आपका। और आपके शादी का एनिवर्सरी का वीडियो देखी, बच्चों के साथ, आपकी वाइफ भी हैं, सब वीडियो में देखी थी, बाकी कमेंट्स नहीं की थी। कमेंट्स की होती तो आपको पता चलता। सही बोल रही हूँ। फिर वही बात, फिर वही बात, बड़े लोग छोटे लोगों को कमेंट नहीं करते। इसमें बड़ा छोटा कोई बात नहीं, मेरी आदत नहीं है कमेंट करने का। लेकिन अब से कर दूंगी ताकि पता चले। बाय, जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक आपके शो कैसे नहीं कर रहे हैं? लाइक कर दियो, अभी नहीं दिख रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लाइक डन करने के लिए। दिल दिल तेरे आशिक, लाइक डन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, लाइव का टाइम अपना चेंज किए हुआ ही है, पुराना ही। सुनिए ना, अगर आपके लाइव पे मैं सुबह नहीं आ सकती ना, तो आपके वीडियो पे सपोर्ट करूँगी, ठीक है?
क्योंकि आपका लाइव सुबह होता है, तो सुबह भी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता सुबह में, तो आपकी वीडियो पे मैं सपोर्ट कर दिया करूँगी। ठीक है। नहीं, जो आप लाइव किए रहेंगे वो लाइव देखने से भी वॉच टाइम मिलता है। जैसे लाइव जो अभी मैं कर रही हूँ, कि फिर हो जाएगा पब्लिक, तो इसको बाद में कोई देखेगा तो इसका भी वॉचिंग मिलता है। सपोर्ट चाहे लाइव पे जाके करो या लाइव वीडियो देखो या वीडियो पे देखो, तो बात मतलब इतना ही हुआ, सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है। चालू है तो भी बताना, वरना सब आप पर हंसेंगे। अच्छा, क्या बताएं, बड़े लोग कर रहे हो आप बार बार। अभी आपके लाइव पे जितना लाइव बंद करने के बाद जितना वीडियो है सब पे कमेंट कर दूंगी। ठीक है। आपका सपोर्ट हो जाएगा। जितना इधर हमारे लाइव पर आप कर रहे हो उतना आपकी वीडियो पे कर दूंगी। बोलो जिग्नेश, चले गए क्या? बाय कर दिए? गए क्या लाइव से? नहीं तो बोलो अभी अपना लाइव चालू करो, मैं अपना लाइव बंद करके आपको ही सपोर्ट कर देती हूँ। ठीक है। अगर वो लाइव तो बोलो। लाइव चलाना है तो अभी चलाओ, मैं आगे सपोर्ट कर देती हूँ आपको तुरंत। अभी चालू करो, मैं लाइव आती हूँ बंद करके अपना, तुम्हें सपोर्ट करती हूँ।
जय श्री राम। और सुनाइए, क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक डन कर दीजिएगा। क्या कर रहे हैं? हाँ, जल्दी आगे, बहुत लेट हो जाता है ना। हमें जब टाइम मिलता है तभी हम चालू कर देते हैं। टाइम देखेंगे ना तो बड़ा लेट हो जाता है। काम करते रहते हैं, चालू कर देते हैं, इसको भी चलता है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अभी आप? लाइक डन, थैंक यू। आप तो अभी आ रहे हैं, जिग्नेश आके चले गए। जिग्नेश आए थे, चले गए लाइव से। हाँ, काम भी होता रहता है, लाइव भी चलता रहता है, साथ में दोनों हो जाता है। और क्या हो रहा है? खाना वाना बन गया आपके यहाँ? अभी खाना खा के एक राउंड मारा कि घर वापस आ गया। अच्छा, खाना खा लिए? कितने बजे? जल्दी खाना खा लिए? अभी 8 बजे नहीं बजे हैं, और जल्दी खा लेते हैं। क्या खाए खाने में? 7 बजे ही खा लिए? अच्छा, ठीक रहता है, जल्दी खाना चाहिए, इस टाइम खाना। क्या खाए खाने में? खाना बना ली हूँ, खाए नहीं है अभी, खाना बन गया है। बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ के उठेंगे, फिर खाना खाएंगे सब लोग।
मेरे घर में सब जल्दी खा के जल्दी सो भी जाते हैं। मिक्स सब्जी और खिचड़ी, रोटी। अच्छा, आपके यहाँ डेली खाने में खिचड़ी खिचड़ी भी बनता है क्या? मतलब जैसे चावल सादा नहीं बनाते, खिचड़ी बनाते हैं क्या? जल्दी खाने से ठीक रहता है, जल्दी खा के जल्दी सो जाना अच्छा रहता है। चंद कहीं गए सियासी, एक दिन निकल के आएगा, चलेगा धन के कमाती खाएगा। दिन दिया है तेरे। हाँ, शाम को हम गुजराती लोग खिचड़ी ही खाते हैं। अच्छा, इसीलिए कल भी पूछे ना तो आप बताए थे खिचड़ी। आज भी खिचड़ी, तो इसलिए खिचड़ी बनाते हैं क्या, इसलिए पूछी। चलो अच्छा है। कैसे कटी रातें। आप लोग के यहाँ दाल और सब्जी में मीठा भी डालते हैं ना? मीठा डाल के बनाते हैं ना? सुनी हूँ मैं कि दाल और सब्जी में सब में शक्कर डालते हैं, मतलब मीठा बनाते हैं उसको। हाँ। अच्छा, दाल में भी डालेंगे शक्कर और सब्जी में भी? कैसे लगता होगा? मीठा मीठा लगता होगा। किसी किसी सब्जी में डालते हैं या हर सब्जी में? थोड़ा बताइए अपने यहाँ का खाना। आपके यहाँ का ढोकला फेमस है? अच्छा, किसी किसी सब्जी में। अच्छा, रस्सेदार जो सब्जी बनाते होंगे उसमें डालते होंगे। तर, तड़का। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? हाँ, अच्छा लगता है, बच्चे लोग देखते हैं। मैं भी देखती हूँ, अच्छा लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बच्चों को तो बहुत पसंद है। अब एक आता है, मतलब कार्टून टाइप का आता है बच्चे लोग के लिए, तारक मेहता का छोटा चश्मा, ऐसे आता है। वो उसको बच्चे लोग पसंद करते हैं।
एक उल्टा चश्मा तो आता ही है, और एक तारक मेहता का छोटा चश्मा, उसको देखते हैं। जेठा जो जेठालाल है ना, वो भी गुजरात से है, अहमदाबाद से। अच्छा, गुजराती हैं वो भी, नहीं पता था। अच्छा, हाँ, वो तो बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, तारक मेहता का छोटा चश्मा। और टप्पू के पापा, टप्पू के पापा अच्छा लगता है। अच्छा, उनका असली नाम दिलीप जोशी है। अच्छा अच्छा, आप लोग के पास से ही है क्या एकदम? आपके यहाँ का ढोकला फेमस है ना? हाँ जी, जलेबी फाफड़ा। अच्छा, ढोकला ढोकला भी मतलब फेमस है, और ये फाफड़ा भी फेमस है। जलेबी फाफड़ा मैं नहीं जानती, नाम भी सुनी बस खाली। ढोकला, उड़ाइयो, उड़ेयू। ये फाफड़ी भी सुनी हूँ, फाफड़ी कैसे लगता है खाने में, अच्छा लगता है? हर जगह का खाना पीना अलग होता है। हाँ, मिक्स सब्जी, सब्जी को उड़ाइयो बोलते हैं। अच्छा, ऐसा। अच्छा, खिचड़ी जो बनाते हैं शाम में, उसमें ये मिक्स सब्जी वगैरह डालते होंगे ना, जो डेली बता रहे हो कि बनाते बनता है हम लोग के यहाँ खिचड़ी, मिक्स सब्जी उब्जी डाल के बनाते हैं, या कैसे बनाते हैं थोड़ा हमें बताइए तो, हम भी सीख जाएंगे। खिचड़ी में तो ऐसे मिक्स सब्जी पड़ती है। नहीं, अलग से बनता है, कैसे बनता है बताओ? तो हम भी बना के खाएंगे, क्या क्या डालती हो, कैसे बनाती हो।
उधर बाटी चोखा बिकता है, लिट्टी चोखा बिकता है आपके उधर साइड? मकर संक्रांति पर ज़्यादातर उड़ाइयो खाया जाता है। अच्छा, चलो ठीक है। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा लिट्टी चोखा खाते हैं। खाए हो आप? आपके यहाँ मिलता होगा, हर जगह बिकने लगा है बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, यही पूड़ी सब्जी, यही सब बनता है। हमारे वहाँ पर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, यूपी के, बिहार के लोग भी होंगे। तो जहाँ बिहार उहार के लोग रहते हैं, यूपी वाले, वहाँ भी मतलब वो लोग दुकान लगाते ही हैं, लिट्टी चोखा, बाटी चोखा। हाँ, खाना हमारा बन गया है। खाना तो बना ली हूँ, खाई नहीं हूँ, खाऊंगी अभी थोड़ी देर में।